the first word that comes to your mind, scar, is something I think that all of us as human beings have. We have either spiritually, emotionally, or physically. And my primary reason to be part of this project is because of Adam. He has expressed to me certain experiences that he has while living abroad, and it's not very nice in terms of there's so much of racism going on around the world, and I think it's absolutely ridiculous and immature. And now I know someone who has been personally involved, and to whatever extent of face value that I have, if it could help him present that story out to the world, is the only reason why I'm part of this project. So uh, yeah. मैं यही कहना चाहूँगा कि when I spoke to Manish ji, and when Manish ji conveyed the message about what's going on, or the word when I met her, and she, as she said, she also felt little bit. She didn't feel very good about it, so she said, "Adam, definitely, I'm going to be a bit part of Yeah, it's a this movie." story worth telling the world, and when somebody has got their personal experience, it's very easy to express that in a film. So we are That's correct. hoping that the way this film is written is done in a way that we can tell the world that this is a man who has actually gone through it, and it's happening. So a lot of people are so fancy about living abroad and working abroad and all of that, whereas it's the best to be in India, where you are Indian, you are respected as an Indian, and you live as an Indian. So I just feel that whole I the way we are going to try and present this project is going to be very sensitive, hopefully. Tell us about your character, Adam and Sneha. What do you want to say about that? So I am playing his wife, who kind of gets in the middle of the racism. I do look fair, and I've got the green eyes and all of that. But the moment they come to know that I am also from here, from India, I also witness that shade of racism. But his character goes through it all, and the hardships we face living abroad basically is what we are going to go through in the project. म्यूज़िक एक्चुअली मुझे जब बुला गया कि ये गाना गाने के लिए, तो मैंने सुना गाना, अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड सिद्धांत का म्यूज़िक था, एंड इज़ अ एक्सेलेंट कंपोज़र। तो हमने गा दिया एक गाना, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था। Yeah. तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड बहुत ही मेरे शायद आप लोग सुनोगे, अभी थोड़ी देर में उसको प्ले करेंगे तो आपको पता चलेगा। Reading the script, Scar, it's a very fascinating movie. It's full of action. I think you'll be at the edge of your seat watching it. And, I think I just heard what Sneha had to say and what Adam had to say about the underlying tone of racism. Now, racism is an interesting concept because we always think, well, racism happens to me and it only happens to me. It doesn't happen to anyone else. Why am I the victim? But really, in life, and certainly in my experience, it doesn't matter which part of the world you are, whether you're black, white, green, purple, it doesn't really matter. If you take away all those layers of what you look like from the outside and what your culture is and what your background is, ultimately you're a human being. And this movie, what it tries to demonstrate is that here's a man, he's patriotic to his adopted country, and all of a sudden, he finds himself in a situation where his rights have been taken away. See, fortunately for me, I've never gone through racism, touch wood. But I do feel that it is a global issue standing even today. And as an actor, we're always hungry to try and present different concepts. I'm a little मैंने glamour और girl next door and वो सब कर लिया है. I need something more in my career, and if I get to present a script that's so sensitive and intense, it's very exhilarating, and I'm quite looking forward
to see how it all shapes up. Every Eid is special for Salman because he's always got a release, but I don't think he needs any of our good wishes. I've always told him this कि आपका good karma is why you are who you are today. So I do feel that there are angels protecting him. I've always felt that, and I'm sure this film will be amazing as well. वो है भी अच्छा आदमी, इंसान के हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है। एंड उनका मूवी अगर रिलीज़ हो रहा है तो 100% ये चलना चाहिए और चलेगा भी, क्योंकि इनमें मेरे को लग रहा है कि ऐसा जो ट्रेलर वगैरह देख रहा हूँ उसमें लगता है कि बहुत कुछ है मूवी में देखने लायक, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी। एंड आई थिंक बेस्ट विशेस हमारा है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट होए। बहुत अच्छा लगा। मैं ये कहूँगा सम पीपल आर बॉर्न विथ, जैसे इन्होंने बोला कर्मा, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनका ऑरा ऐसा है कि वो सुपर डुपर हिट होगी और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि ज़रूर हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब समुद्र में टाइड आता है तो सारे नाव ऊपर होते हैं, अगर एक मूवी हिट होगी तो और मूवी भी हिट होंगी। तो आई बी ब्लेस, आई विल प्रे गॉड की सक्सेस फॉर इंडस्ट्री। But then we pray that every film is also a hit. As an actor and part of the film industry, we need rolling of money and work. So we want all the films to be hit. बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि स्टूडियो नेशन यूके ने मौका दिया मुझे, एडम सर ने मौका दिया है, ट्रस्ट किया है, तो बहुत बड़ी बात है। बस ऐसे ही सबका ट्रस्ट जीतना है। और सिद्धांत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सिद्धांत सर बहुत अच्छे गाने बनाते हैं और सिद्धांत सर के लिए 1-2 गाने और भी गाए, और ये तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसे सर का एकदम ही सैड था ना, मेरा थोड़ा सा पार्टी टाइप का सॉन्ग है। फ्रिकिंग आउट सॉन्ग। सर आप, हम लोगों ने कोशिश किया है कि अलग अलग तरीके से जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल्म को जस्टिफाई करें। और मेरा पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि गाना तो सुपर हिट होना ही चाहिए, अच्छा गाना बनाना है। होप ये गाना अच्छा लगा होगा आपको। कैसा लगा? ओके। सो गाना तो अच्छा लगे ही, साथ ही जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन को जस्टिफाई करे गाना, उस सिचुएशन के साथ जाए। तो ये मेरा सबसे पहला जो काम होता है वो यही होता है कि मैं इस तरीके के गाने बनाऊं जो फिल्म के सिचुएशन पे फिट हो। और उसमें जब आपके पास इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि लीजेंड सानू दा आपके लिए गा रहे हैं, फिर दिव्या कुमार, ही इज़ अगेन माई पर्सनल फेवरेट सिंगर, एंड दिस न्यू गाय आई एम टेलिंग यू ही इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग सिंगर इन फ्यूचर। सो आप समझ सकते हो एक नया अरिजीत तैयार हो रहा है। सो ही इज़ आउटस्टैंडिंग, और फील के मामले में इसका जवाब नहीं है। तो इसने भी मेरा गाया और मेरी प्रियोरिटीज़ में ही इज़ ऑन द टॉप। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छा एल्बम तैयार किया है, और जब भी ये फिल्म बनेगी, रिलीज़ होगी, आई एम श्योर ये गाने आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और बस दुआ करिए ऐसे ही अच्छे गाने बनाए हम लोग। मुझे एडम सर का लुक, पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी एडम सर को। उनके साथ मैं सेकंड फिल्म कर रही हूँ, पहली फिल्म स्कॉटलैंड थी और अभी ये फिल्म कर रही हूँ। और मनीष सर का थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे डायरेक्टर सर, और सिद्धांत माधव सर जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़िक, एंड आई एम लिटरली सो ग्लैड टू हियर ऑल द सॉन्ग्स, इतने ब्यूटीफुली सिंग किए हैं जितने भी हमारे कलाकार हैं। और बस मैं बहुत खुश हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई फील। अरे एकदम अनबिलीवेबल था कि मुझे तो अभी भी ऐसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सर ने बताया मूवी में और भी जावेद सर का भी गाना है, शान सर का भी गाना है, और मेरा भी उसमें गाना आ रहा है। तो एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों को इतना मैं फॉलो करता हूँ, सभी से इंस्पिरेशन लिया है मैंने, और आज उनके साथ बैठा हूँ तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।